and welcome you watching. This is exclusive with me, Shavan Sen. Tonight we get you that big interview with the Interlocutor of Kamtapur Liberation Organization. If all goes well, then we are now witnessing yet another peace deal. This time with an insurgent group who has only created havoc in several districts of West Bengal as well as in Assam. We are in the cusp of signing that particular agreement. What does this essentially mean for the northeastern state as well as for the state of West Bengal? And what exactly is the KLO? We'll get you all the details in this edition, but up first, these are the headlines we are tracking for you at this hour. Republic Bangla Super exclusive news break coming up at 6 p.m. where videos gives proof of banned terror organization KLO's chief entering India. Banned terror organization KLO's chief enters India for talks with the government. Republic speaks to Interlocutor. Vadra Congress insults valor of our forces, but no condemnation, no action yet from the top leadership. Rajya Sabha parliamentarian Mahesh Jethmalani takes on Jairam Ramesh, questions China links. Despite ban on the BBC docuseries in media, screening at multiple campuses. Delhi mayor elections called off again after heavy sloganeering and ruckus between the Aam Aadmi Party and the BJP at the Civic Centre. Ladies and gentlemen, this is a Republic Bangla Super exclusive. Not many have heard about the banned terror organization, Kamtapur Liberation Organization, or better known as the KLO. This is an organization which has come up with the objective to carve out a separate Kamtapur state comprising 6 districts of West Bengal and 4 districts of Assam. In a big exclusive that your channel has got, there are pictures and videos that confirm that KLO chief Jibon Shingo is in India and he entered via Mon district in Nagaland. We'll get you the latest report as to why exactly this is so very significant and how exactly will this really pan out. There are now talks that we are in the cusp of signing an agreement, a peace accord that could be signed between the government of India and the KLO. What does that essentially mean? KLO operates many camps in countries like Bhutan, Nepal and Bangladesh. With the return of KLO chief who has been in constant touch with the ULFA, does that really mean that there would be pressure on the ULFA also to come on the negotiating table? Take a look at this report as to the return, whether at all Jibon Shingo has now come back to India and he is all set to have a talk with the government of India. Take a look at this report and then we'll also focus on that big interview that we're getting to you tonight. Dondobot Gota Hanoke Azi Amira Gota Hane KLOর লগত ভারত সরকারের যে চুক্তি এই চুক্তিত বসিবার জন্য আমি গোটাখানে জঙ্গলের থাকি বাইর হয়ে যাবার ধরছুম গোটা একজ ক্ষমতাপুরীবাসী জনগণের সহায় সহযোগিতা আর আশীর্বাদ কামনা করলাম আর আমাক নিবার জন্য আমার এতে উপস্থিত হয়েছে আমার স্যার একবার These are the leaders of the Kamtapur Liberation Organization, known as KLO, fighting for a separate Kamtapur state, marching through the jungles to cross over into India. They have now decided to give up their arms.
अभी जीवन सिंह इसीलिए आ गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेपरेट जो स्टेट का डिमांड है वो सॉल्व करने के लिए तैयार हो गया, एग्री हो गया, इसीलिए आ गया। तो जीवन सिंह को पहली बार भी एक एनसी वो लेन छोड़ के वो नहीं बोला कि हम एक एनसी छोड़ के तो हम जो मेन मुद्दा है कमतापुर डिमांड उससे हम भागे आएंगे, पीछे आएंगे, ऐसा नहीं होगा। अभी भी वो इंडियन टेरिटरी नहीं, वो फुल प्लेजेड एक स्टेट डिमांड करके वो सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ जो डेलीगेशन है उन लोगों से बात कर रहा है। Jiban Singh Kot, chairman of the banned terrorist outfit Kamtapur Liberation Organization, has entered Indian territory from his hideout in Myanmar, along with key interlocutors in tow. Sir, The chief of the KLO has claimed that he will be taking part in bilateral peace talks with the government of India. There have been reports of the active mediation of Himanta Biswa Sarma, the Chief Minister of Assam. A date on such an agreement is not known, but sources indicate a breakthrough could be achieved this week. The KLO was formed in December 1995 by students from the indigenous Rajbangshi community. They launched an armed struggle to form a Kamtapur state comprising districts of North Bengal and Assam. The outfit was banned by the government in 1997. Since then, they've been constantly changing base from the jungles of Bhutan to Bangladesh and recently hiding in the jungles of Myanmar. If the peace deal with KLO comes through, undoubtedly it's going to be a big win for the Modi government. Having said that, the presence of KLO chief in India in itself is a step towards a victory. It remains to be seen what's going to be the framework of this peace deal. Will KLO give up arms? And the fact that whether at all this is now going to push the Alpha in Assam to come onto the negotiating table. In the last few years, since the Modi government took over, several insurgent and terror groups have come to the table. KLO interlocutors are confident that this time peace will be permanent. Will New Delhi take the next step now? A Republic TV report. don't know what I can okay. Azi Let me also bring in my colleague Ishan Dev, who's going to join us from the Bangla newsroom. Ishan Dev, just quickly walk us through the details of what we know so far. Jibon Chingo is already in India, at least if you go by the videos that have been accessed. Do we have any idea as far as whether the talks have already begun? Shravan, the talks are yet to begin, and Jiban Singh, as you have shown in your reportage, that Jiban Singh, who was in his hideout for a long time, and he has come overground, and from outside India he has come into India, and through the mediation of the interlocutors, they have reached at a table from where they can have considerable discussions with the concerned authorities of government of India. We have this is known to us so far, and as you are saying that this problem is a long-standing problem in the northern parts of West Bengal, and you know that KLO finds its roots in the students' organization named as All Kamtapur Students Union, or AKSU, and when AKSU, the leadership of AKSU, decided that it will go for an armed struggle for creation of a separate Kamtapur nation, at that point of time they approached the ULFA, that is known as a terrorist outfit in Assam, and coming into a collaboration with ULFA, they created this militant organization named as KLO. And not only Jiban Singh, Tom Adhikari and Milton Burman were also there in the leadership, but they are already in the mainstream. Tom and Milton. Jiban Singh was in his hideout, and now he has come back. And so far as we are concerned, that a treaty can be reached at such a situation has been created, and after the talks ends, KLO leadership can announce that they are going to surrender. Sawan. Well, thank you very much, Ishan Dev, for getting us the latest. But now we're going to get you an interview that gives you a fair idea of what's really happening.
KLO chief Jivan has already claimed that he will be taking part in the bilateral peace talks with the government of India with the active mediation of Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma. Republic also spoke to Biswajit Ray, the interlocutor of the case. He had some startling revelations to make. In fact, he was the person who was in touch with Jivan Shango, and the fact that it was he who had brought Jivan Shango inside India and he was present there. So what is it that they are now going to talk with the government of India? What are the conditions of this particular deal? Listen into this exclusive conversation that I and my colleague Bayuk had with Biswajit Ray, KLO's interlocutor. Ladies and gentlemen, we are on the cusp of a historic agreement being signed between the government of India and the KLO, the Kamtapur Liberation Organization. For the longest time, the KLO has been a threat to states like Assam and West Bengal. There has been a demand for a separate state, leading to several violent activities taking place, especially in North Bengal and several districts of Assam. Finally, it turns out that the chief of KLO has agreed to sign a peace accord with the government of India. Joining us on this special broadcast is Biswajit Ray. He's the interlocutor from the side of the KLO, the man who's been part of the committee trying to figure out a midway for the KLO and the government of India. Biswajit, thank you very much for speaking to Republic TV. Let me straight away begin by asking you, Jivan Shango was here, is he right now in India? That's what reports are suggesting. Tell us what has really changed. The man who was on the run, the man who has been changing countries, has finally now decided that it's game over and he wants to sign a peace deal with the government of India. KLO, Kamtapur Liberation Organization, demanding reorganization of separate Kamtapur state since 1993. And same time, the Assam and Bengal का जितना democratic organization है, वो लोग भी पास दशक since 50 years demand करा रहा है कि then Home Minister sir then Home Minister Vallabhbhai Patel between last king of Kamtapur Sir Jagadip Narayan 1949 28 August जो मर्जर एग्रीमेंट हुआ, उस मर्जर एग्रीमेंट में स्पष्ट भावे लिखा है कि उन लोगों को सेपरेट स्टेट दिया जाएगा, सी कैटेगरी सेपरेट स्टेट दिया जाएगा. लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947 का 2 साल बाद में ये मर्जर एग्रीमेंट होके ये हम लोग का जो कोस्ट बिहार जो स्टेट था, वो प्रिंसली स्टेट जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ जुड़ी हुआ है. तो उस टाइम में जो एग्रीमेंट में जो स्पष्ट भाव लिखा है कि हम लोग को गो स्टेट सी कैटेगरी स्टेट दिया जाएगा, वो बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिवाइड एंड पॉलिसी करके हम लोग को डिवाइड किया, वो हम लोग को नहीं दिया. फिर हम लोग को डिवाइड किया दिया, बंगाल, बिहार, मेघालय, आसाम, ऐसा तरफ से हम लोग को भाग करके हम लोग का जो ऐक्ट था उनको डिस्ट्रॉय कर दिया. फिर हम लोग आसाम और बंगाल का जो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, डेमोक्रेटिक मूवमेंट करके ये मांग रहा है कि जो हम लोग को जस्टिस मिलना चाहिए, जो मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू 1949-28 जो मर्जर एग्रीमेंट, वो हम लोग को दिया जाएगा. अनुरूप जो KLO शिव जीवन सिंह फ्रॉम 1993 वो सॉवरेनिटी डिमांड करके वो हाथ में आर्म्स लेके वो चला गया. तो इसीलिए हम लोग अभी एक हो गया. जीवन सिंह जो सॉवरेनिटी डिमांड है वो छोड़ करके अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का साथ बात करके पीस तो करके जो हम लोग का जो मूल मुद्दा है, जो डिमांड है, जो लेजिटिमेटिक डिमांड है, वो मांग करके अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बात करने के लिए वो आ गया. और हम लोग भी एज ए पीस कमेटी हम लोग ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिटवीन KLO का साथ जो बात हो रहा है, जो मेरे को समझना है, तो थोड़ी देर हम लोग तैयार किया. विश्वजीत, जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि क्या आप ये कह रहे हैं कि अभी भी जीवन सिंगो अभी भी वही मांग कर रहे हैं कि सेपरेट स्टेट हो? क्या वो मांग अभी भी है कि आप उसमें कुछ बदलाव दिख रहा है कि बिना सेपरेट स्टेट के भी पीस टॉक्स हो सकते हैं और वो डिमांड वो
गिव अप करने के लिए तैयार हो चुके हैं? हाँ, वो तो पहले से सोवरेन कमतापुर डिमांड किया, लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ा आश्वास दिया था, ये जो मुद्दा है सेपरेट स्टेट का जो मुद्दा है वो मुद्दा लेके बात करेंगे, ये सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। और ये जो हम बताया जीवन सिंह जी को, तो वो बोला ठीक है सहमत हो गए, इसीलिए वो सोवरेन डिमांड करके अभी मेन स्ट्रीम आके वो बात कर रहा है। वो पहले भी स्पष्ट करके दिया था जब तक ये राज्य स्टेट नहीं होगा, रिफॉर्मेशन सेपरेट कमतापुर नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग बात करने के लिए भारत भूमि में नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे। तो अभी जीवन सिंह इसीलिए आ गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेपरेट जो स्टेट का डिमांड है वो सॉल्व करने के लिए तैयार हो गया, एग्री हो गया, इसीलिए आ गया। तो जीवन सिंह को पहली बार भी एक एनसी को लेन छोड़ के वो नहीं बोला कि हम एक एनसी छोड़ के तो हम जो मेन मुद्दा है कमतापुर डिमांड उससे हम हटे आएंगे, पीछे आएंगे, ऐसा नहीं होगा। अभी भी वो यूनियन टेरिटरी नहीं, वो फुल प्लेजेड एक स्टेट डिमांड करके वो सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ जो डेलीगेशन है उन लोगों से बात कर रहा है। और हम लोग भी साथ ही है कि आसाम, बंगाल और बिहार लेके जितना हम लोग 18 डिस्ट्रिक्ट लेके जो डिमांड कर रहा है वो जस्टिस देगा। और जीवन सिंह भी यही चाहता है कि बंगाल का 8 डिस्ट्रिक्ट, बिहार का 3 डिस्ट्रिक्ट और आसाम को जो सोरभोग बरपेटा डिस्ट्रिक्ट का सोरभोग लेके जो अनडिपेंडेंट गोवालपाड़ा जिला है सारा लेके एक सेपरेट स्टेट कमतापुर दिया जाएगा। वो पीछे नहीं आता और कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना चाहते, वो स्पष्ट भावे ये बोल के दिया सेंट्रल गवर्नमेंट। विश्वजीत, आप इतने सारे KLO लीडर्स के साथ, यू आर इन टच विद ऑल दिस KLO लीडर्स एंड इनफैक्ट जीवन सिंह, who approached first? Is it Jibon Shingo who understood that his game is going to end and he approached the Indian government with a specific demand? Since 2010, Jibon Singh tried to communicate to government of India. उस टाइम then होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम था, असम का गवर्नमेंट लेड तरुण गोगोई जी था, पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर ममता दीदी को मैंने खुद चिट्ठी लेके भेजा कि जीवन सिंह मेन स्ट्रीम में आके बात करने के लिए साजू है, रेडी हो गया, तो आप लोग थोड़ा इसमें कोऑपरेशन करना है। बाद में उस टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये बात करने के लिए थोड़ा डिले किया, तो ये सारा जो इंटरेस्ट है बाद में फिर स्टॉप हो गया, फिर और 2021 से शुरू हो गया। तो जो अभी जो हम लोग का गृह मंत्री है अमित शाह जी से उनका मीडिएटर ने डायरेक्टली टॉक किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी बोला कि ठीक है, अगर वो सोवरेनिटी डिमांड छोड़ के अगर बात करने चलते हम लोग रेडी है। तो मैंने सुना है उस टाइम आसाम का चीफ मिनिस्टर को तो जिम्मेदारी दे दिया, तुम जीवन सिंह से बात करो, जीवन सिंह क्या चाहते सब कुछ करने के लिए उनको जिम्मेदारी दिया। और गवर्नमेंट ऑफ आसाम का जो चीफ मिनिस्टर है वो भी बाय टेलीफोन जीवन सिंह से बात किया, कई बार बात किया, हम भी बात करके चीफ मिनिस्टर से बात किया और चीफ मिनिस्टर का जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे भी हम लोग बात किया। तो बाद में 2021 का 3 दिसंबर में डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने अखबार में एक ट्वीट किया करके वो वेलकम किया जो जीवन सिंह मेन स्ट्रीम में आगे बात करना चाहते हैं, इसलिए हम खुशी है और ये आदरणीय पदक्षेप है। तो 2021 दिसंबर से ये शुरू हो गया। तो पहले मैं भी था, डायरेक्टली होम मिनिस्टर का ऑफिस में बिहार से बात हो गया, आसाम का चीफ मिनिस्टर से बाय ओवर टेलीफोन कॉन्फ्रेंस में बात भी किया। तो ये अभी जो डेवलप है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा आंतरिकता है, आसाम गवर्नमेंट का जो चीफ मिनिस्टर है माननीय डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा का अवदान है, इसीलिए वो आ गया। और मेरा मानना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आश्वास देके जीवन सिंह को अभी इंडिया में लेके गया, इसमें आसाम गवर्नमेंट, बंगाल गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सब करने के लिए सहायता कीजिए, ये हम लोग का उन लोगों का ऊपर में हम लोग का रिक्वेस्ट। लेकिन आप लोगों ने तो अभी भी सरेंडर, KLO ने तो अभी भी सरेंडर नहीं किया विश्वजीत, सरेंडर नहीं किया। तो पहले जीवन सिंह ने जीवन सिंह ने स्पष्ट कर दिया, तो हम लोग सरेंडर करके पीस तो बैठने के लिए पहले सीज पेयर होगा, सीज पेयर करने बाद हम लोग पीस एग्रीमेंट करेगा। इसीलिए जीवन का सिंहों का साथ अभी 9 KLO कैडर्स एंड लीडर्स आ गया, उन लोगों के साथ गवर्नमेंट का बात होगा, पीस टीम होगा। आफ्टर पीस तो अगस्त पीस एग्रीमेंट का बाद उन लोगों का जो कैडर्स है, अभी म्यांमार में है, कोई बांग्लादेश में है, नेपाल में है, भूटान में भी सब लोग एक साथ आके वो आर्म्स ले डाउन करेगा, फॉर्मली करेगा। तो बिफोर पीस एग्रीमेंट
वो लोग आर्म्स ले डाउन नहीं करेगा, वो लोग इंडिया में नहीं आएगा। तो आफ्टर पीस एकॉर्ड करने के बाद एक डेट फिक्स करेगा और उस टाइम में सारा जो कैडर्स अभी बाहर में है, जंगल में है, वो लोग आके वो लोग आर्म्स ले डाउन करेगा और मेरे ख्याल से ये करने के बाद KLO ऑफिशियली वो लोग आ जाएगा। विश्वजीत, और एक चीज जो जानना चाहूंगा वो ये है कि पीस टॉक्स शुरू हो चुकी हैं? और दूसरी बात, जब मॉन डिस्ट्रिक्ट में आप पहुंचे थे और जीवन सिंह को नागालैंड की ओर से अंदर भारतवर्ष के अंदर आए, तब आपके उनसे जब बातचीत हुआ, उनका क्या कहना था? सबसे पहले उन्होंने क्या कहा आपको? और दूसरी बात, ये पीस टॉक्स कब शुरू होने वाले, अग्रीमेंट कब साइन होने वाला है? नहीं, मैं लास्ट 12 जनवरी से शाम को मैं बात किया था। वो बोला कि मैं आ रहा हूँ, आने के लिए कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा सब सारा ठीक हो गया। फिर 2 दिन का बाद में वो म्यांमार सर के मोन डिस्ट्रिक्ट होके इंडिया में आ गया। तो उस टाइम ने हम लोग स्पष्ट करके दिया, उन लोगों को स्पष्ट करके दिया, आप आ जाओ, बात करो, सब कुछ गवर्नमेंट का, इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव उनसे बात अभी भी बात चल रहा है। अभी भी गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंड होम मिनिस्टर का ऑफिस जो ऑफिस है उन लोगों से बात कर रहा है। और मैंने सुना है जो बंगाल का जो MP है, स्टेट होम मिनिस्टर है, निश्चित परमानेंट भी इस मुद्दा को सॉल्व करने के लिए प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर से बात कर रहा है। तो अभी ऑफिशियली सीजफायर नहीं हुआ, इसीलिए ओपन नहीं हुआ। तो सीजफायर एग्रीमेंट का बाद ओपन होगा, फॉर्मली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ बातचीत होगा। अभी सीजफायर नहीं हुआ, इसीलिए फॉर्मली ओपनली बात नहीं हो रहा है, ओपनली ऑफिशियल टॉक नहीं रहा है। तो अभी रिसेंटली विदिन 2-3 डेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जीवन सिंह का साथ एक पीस एग्रीमेंट सीजफायर होगा। सीजफायर करने के बाद ऑफिशियली जो टॉक होगा वो टॉक शुरू होगा। और एक चीज जो जानना चाहूंगा कि ये जो पीस टॉक्स की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन सिंह जो डिमांड कर रहे थे, सेपरेट स्टेट की जो डिमांड कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं वो डिमांड को छोड़ने के लिए तैयार है, कि वो अभी भी वो डिमांड रखेंगे कि सॉवरेन स्टेट हो, कामतापुर बने, इसकी जो मांग है वो अभी भी मांग रखना चाहेंगे? वो डेफिनेटली वो इसीलिए आ गया, उनका अभी भी वो एडा में है। 1949 का जो मर्जर एग्रीमेंट है उनको मुताबिक ये स्टेट जो डिमांड है रिफॉर्मेशन करना है, वो डिमांड सर के वो कुछ बात नहीं कर रहा है। अभी हम लोग इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ऊपर में ध्यान दे रहा है। वो लोग हम लोग का जो जस्टिस है, लॉन्ग स्टैंडिंग जो हम लोग का डिमांड है, आई थिंक ये सेंट्रल गवर्नमेंट खुद वो लोग मालूम है कैसे हो गया, कैसे था। तो मेरे वाले ये जो जीवन सिंह का जो मेन डिमांड, सेपरेट स्टेट डिमांड, वो मुद्दा लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विदिन शॉर्ट टाइम ये सॉल्व करेगा। जीवन सिंह इस डिमांड का छोड़ के कोई अभी एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं है। इवन यूनियन टेरिटरी भी वो नहीं चाह रहा है कि यूनियन टेरिटरी नहीं चाहिए, हम लोग को फुल प्लेजर स्टेट चाहिए। In a big embarrassment for Vadra Congress, a day after Vadra Congress asked Saboot on surgical strikes, Digvijay Singh, on being confronted, made a U-turn, saying that it has greatest regards for the armed forces. पार्टी ने किनारा कर लिया, पर क्या कायम है आप अपने बयान पर? Statement, how it can be wrong? The comments made are the comments by the opposition. I have got the greatest regard and respect for our defence forces, and I hold them in highest esteem. But NI has already presented a charge sheet. No end to Bengaluru civic apathy in yet another incident. A BESCOM worker lost his life after suffering electric shock while repairing a transformer in Bengaluru. Days after the centre blocked airing of BBC documentary on Prime Minister Modi, a complaint was filed over the screening of the controversial series at the University of Hyderabad campus. Former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee transformed India's relationship with the US and
Russia External Affairs Minister S. Jaishankar at the third edition of Atal Bihari Vajpayee Memorial Lecture, saying, and I quote, Atal Bihari Vajpayee transformed India's ties with US Russia. Himachal Pradesh Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu attacked former Chief Minister Jairam Thakur over his allegations regarding state borrowings. Addressing the media, the Chief Minister of Himachal Pradesh said that I do not want to get into needless political blame game. हिमाचल के लोगों पर 75,000 करोड़ का कर्ज, 11,000 करोड़ के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को 6th पे कमिश्नर का एरियर और 992 करोड़ डीए का एरियर जयराम सरकार जो हम पर छोड़ कर गई है और 900